Most welcome, Sidvidya. Sir, I want to seek your permission so that I may start the proceeding. You have organized so well. Eh? I think at the last moment you should not seek my permission. I can't dare to say that no, don't start. Please go ahead. Okay, sir, thank you so much. Uh, res- Respected Head and Dean Faculty of Law BHU, Professor Ali Mehdi sir, respected Professor D.K. Srivastav sir, distinguished panelists, colleagues, and dear students. A very good evening and a warm welcome to all of you. Wish you all a very happy International Women's Day. It is said that women of great courage, wisdom, and optimism join together, society changes profoundly. When a united force of fearless women emerges, the time changes dramatically. Friends, I am happy to share with you all that on the one hand, our country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and on the other hand, our law school is all set to commemorate its 100 years of establishment. Recently, the National Commission for Women has celebrated its 30th Foundation Day with the theme, She the Changemaker. It is actually a belief that when a woman makes path, it inspires many more women to come that way. So we decided to conduct a webinar on International Women's Day with those distinguished alumni of Faculty of Law who have really been the change maker in the society. Friends, we are here to record their contribution, to recognize their presence, and to show our tribute to our own alumni who have not only broken the glass ceiling and overcome all the challenges, but also became the role models for the society. Friends, we know that it is vital to recognize the achievements of women, but these celebrations cannot serve as proof that we have reached our goal. Instead, they should serve as an inspiring reminder of how much further we must go to reach gender equality and how much more we will accomplish when we do. I feel myself privileged to inform you that today's function is to be graced by 9 distinguished alumni of our faculty, right from the First Lady LLM of Faculty of Law to First Lady Judge of High Court from our faculty to the first batch student of mine, that is Siddhvidya, and today they are here to share the motto of Faculty of Law and logo of Banaras Hindu University. Need not to mention that all of them have been extremely versatile. They have become head and dean of various universities of repute, and they are making their presence recognized at global level. So I think no other day would have been more appropriate than the International Women's Day to bring them together and get inspiration from them so that our students may also become the change maker in the society. Friends, our authorities have a responsibility to seek diversity, value equity, and embrace inclusion, whether in the workplace, community, government, or industry. The thoughts, action, and support of our authorities are paramount to women's advancement. We are fortunate to have such authority as our head and dean. So without any further delay, I would like to invite Professor Ali Mehdi sir, the head and dean, Faculty of Law BHU, to deliver the welcome address. Respected Professor Ali Mehdi sir. Okay, thank you, Professor Vibha. Indeed, it's a great pleasure this great evening where we have virtual interaction with our great alumni as well as the existing students of Faculty of Law. As Vibha told that this year we are celebrating the centennial year of our functioning, and I feel that this year also adds something very unusual in celebrating the International Women's Day. We have our faculty members with us and also those who have already student of Not audible? sorry,
Oh, there was some disconnect. Okay. Am I audible? Yes, sir, yes. Okay, fine. Thank you. Sorry. So, we have some special occasion again because of our 100 years to celebrate this International Women's Day. And I congratulate all of alumni who are virtually connected with us, and also Professor Vipa Tripathi, because it was her initiation to start or to have this kind of assembly and celebrate the International Women's Day. Uh, the so far the International Women's Day, I think it is an occasion to appreciate those who have achieved something in their career by their hard work, by their independent hard work, and also it is an inspiration to those who are learning, who are studying here, and they may follow the pathway of our esteemed alumni who have now reached to the excellence in their career. So far, the Women's Day is concerned, I think that the recognition of the potentiality of the women uh, and further support, it starts from the home, the family, rather the family, where the family members, they should encourage the girls to come forward to participate, to study, and also carry on the career of their choice. There should not be at the first step. I feel that the first interest is the family, and subsequently, when they come to the study field, of course, they should have their choice to study, and they should have the liberty to choose their career. I think the women, they have a caliber, they have the strength, because if they can maintain the family, I feel they are they can maintain themselves. They can choose. They can take the right decision, and they can achieve something. So there should not be any such hindrance from outside or something that would support, rather that would cause some kind of impediment in their pursuit, and they should be at liberty to move forward. Now, so far the achievement is concerned, I feel the basic thing is the education. And just I was going through the Constituent Assembly debates. Constituent Assembly has how many female members were in the Constituent Assembly. I found that there were 15 members, female members, and it was about 5%. And at that time, the education rate of the women was only 8%. Now, if you compare to 2021, 22, now here the education rate is around uh, 86%, sorry, 65.46%. And in the house, the strength is only 14%. So this is the gap that, okay, the education rate has increased, but with that ratio, the participation in the house, it has not increased. Think of the day when the Constituent Assembly was constituted and the members were deliberating upon for the formation of the Constitution of India, and at that time there were 5% female members were present in the house. I think that at that time it was a great good number, and compared to that, now we have only 14%. So I feel that the women can achieve if they get the power. So far, the constitution is concerned, I think there is no such discrimination, and even at the block level, the reservations of seat have been made for the women, but at the main seat of power, I think we lack the proper percentage of the women, because population is say around 50-50%, half of the population approximately might be the females, but their participation from that viewpoint, I feel, is negligible. The other point is that the female who maintain the house,
I think in the economic growth or their contribution is not considered. It is almost zero. And the truth is that 159.85 million women, they are engaged in household work. And if their contribution is not recorded, again it is setback for the woman to get some kind of inspiration and encouragement to do more work, to do hard work for that purpose. Now the women, the faculty, rather our alumni, since they have achieved many of our alumni have achieved excellence in their career. I feel that they are able to tell what is the position, what is what are the causes that might have caused some kind of hindrances, and they have overcome and finally reached to their destiny. So, with this background, I would like to just quote one observation from Ambu Swaminathan. She was the member of the Constituent Assembly, and she has mentioned that what is written on paper would have value only when people want to pay heed to it. I think this observation in the Constituent Assembly is sufficient, that only writing, say for example, the various provisions of the Constitution, various provisions of the statutory laws are there. Are they successful? Now, we have to make some introspection to see that how these provisions should be made more effective and object oriented. Now, with this some introductory remark, I would like to welcome all my esteemed alumni, because they have a lot of experience. The faculty, they have experience in the faculty and in their career. So I think there can't be better person than to speak on behalf of regarding the International Women's Day, and therefore I welcome all the participants. I know we have a select list of alumni, and each and everyone has her own experience, and she can speak better on the topic that she change maker. But Professor Viva has suggested she is a change maker, and just as a faculty of Dean Faculty of Law, I congratulate all of you. I welcome on behalf of the faculty, on behalf of my colleagues, and my own behalf to all of you, and hope your interaction would certainly could be guiding our young students, and then they can get something from the talk. In the last, just I appreciate a poem by कैफी आदमी साहब की एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं उसको आपसे शेयर करना चाहूँगा। और उसमें उन्होंने उनके शेर पढ़ने से पहले मैं कुछ वर्ड्स जो हैं, हो सकता है किसी को कुछ परेशानी हो, तो मैं उसको पहले मीनिंग बता दूं, फिर मैं उनके शेर को पढ़ूंगा। इसमें 2-3 शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जैसे कि जहद। जहद मीन्स जिसे हम लोग साधारणतः इसको यूज़ करते हैं जद्दोजहद, स्ट्रगल। और दूसरा है नब्ज़ हस्ती। नब्ज़ हस्ती कहते हैं लाइफ को, और निकहत कहते हैं खुशबू को। खमे गेसू खबे कहते हैं बांधने को। और बाकी सारे शब्द बहुत ही आसान हैं, आप सभी लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं उनके शेर को पढ़ करके, और मुझे लगता है कि इस पूरे शेर में वो सारी चीज़ें आ गई हैं जो कि एक फीमेल के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेंगी, और शायद ये हकीकत भी हो जो उसको वो रियलाइज़ कर सकें। कैफी आदमी साहब लिखते हैं कि ज़िंदगी जिहद में है, सब्र के काबू में नहीं। स्ट्रगल करो, सब्र मत करो। ज़िंदगी जहद में है,
सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। नब्ज़ हस्ती बोले जिंदगी का खून जो है, खून को दौड़ाओ, खून को कदमी लाओ, ना कि कांपते आंसू में, ना कि आंसुओं में उसको बहा दो। तो जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निखत, हमें यीशु में नहीं। बालों की खुशबू से है उनका कहना कि जितने ही उड़ेंगे, जितने ही खुलेंगे, इसका मतलब ये है कि लिबर्टी का उनका इशारा है कि देयर मस्ट बी लिबर्टी। तो उड़ने खुलने में है निखत, हमें यीशु में नहीं। बालों को बांध के रखिए तो शायद वो खुशबू बाहर नहीं निकल पाएगी, बल्कि उनको लिबर्टी दीजिए। उड़ने खुलने में है निखत, हमें यीशु में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। अब ये शेर जो है कि हम लोग, या मैं आई एम सॉरी, कि औरतें जो है ये महसूस करती हैं कि मर्द है, कस्टोडियन है, प्रोटेक्टर है, और दैट्स ऑल। तो इस पर उन्होंने कहा कि जन्नत एक और है, मर्द के पहलू में नहीं। तो इन कैफी आदमी साहब के इस शेर के साथ मैं एक बार फिर आप सबका मैं वेलकम करता हूँ, एंड आई होप दिस इंटरेक्शन वुड बी वेरी फ्रूटफुल, एंड एक नई उमंग हमारे नए बच्चों में जो अभी हमारे पढ़ रहे हैं, they will get inspired, they will get some lesson, they will feel encouraged. Thank you, Viva. Thank you so much, sir. Actually, you have given a very enlightening speech in form of welcome and the share especially. और मैं अभी ये भी बताना चाहूंगी कि आभा त्रिवेदी मैडम भी जुड़ गई हैं, राजलक्ष्मी सिन्हा मैडम भी जुड़ गई हैं, और बच्चों से मैं एक छोटा सा निवेदन ये करना चाहूंगी कि एट द 11th आवर हम लोगों को स्विच करना पड़ा आपके गूगल मीट पे, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, तो हम रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल कराएंगे आप लोगों को। और आज चूंकि पार्टिसिपेंट्स को एंट्री देना और 100 का रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं कुछ लोगों को उनको एडमिट नहीं भी कर पा रही हूँ, तो मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और उनको हम सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराएंगे। और बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो ये मैसेज कम्युनिकेट कर दें कि चूंकि हम अपने पार्टिसिपेंट्स का भी वेट कर रहे हैं, और उनको ज्वाइन जब वो कर लेंगे तो फिर जितनी भी हमारे पास सीट बचेगी हम उन लोगों को एडमिट जरूर करेंगे। So thank you so much, sir. Your guidance and support at very small step, every small step motivated me to move ahead, and literally I have no words to express my gratitude to you. And friends, today's program, She the Change Maker, is aimed at celebrating the achievements of women, our alumna, who have acquired different positions in different fields of law. And before inviting Advocate Siddh Vidya, I would like to inform you that Advocate Siddh Vidya is practicing law for more than 14 years. She pursued her LLB from Banaras Hindu University and studied international arbitration for her LLM course from the University of Birmingham, United Kingdom. She started her law practice with some of the highly reputed corporate law firms in Delhi and Mumbai. For more than a decade, she has been independently and successfully representing her clients in a variety of matters. She is known for her deep understanding of law and never say die attitude when it comes to protecting the interest of her clients. She has been engaged by the government of Maharashtra as a special counsel to represent them before the Honorable Supreme Court of India in various matters. She is also contributing to the society by taking up several pro bono cases related to women and child welfare, social welfare, animal rights, environmental laws, etc. Our students will really be benefited through your deliberations, Vidya. Looking forward to you. The floor is all yours. Thank you so much, ma'am. And I have no words really. It's such a proud moment for me that my teachers are introducing me. You have taught me, and it's a memorable. It's going to be a memorable moment for me, and it's a very emotional moment as well, because as you told me, the first LLM from our law school, I am dying to meet her. Really, the first LLM. And when I heard, I am very desperate to see who is the first LLM from our law school. You know, we are going to complete 100 years. She will be joining from USA. I could hear the conversation in the beginning when they're just informally chit-chatting. So I was there in the
background and hearing all that. Okay, ma'am. So I assume all the speakers, whoever, all the dignitaries are definitely super duper senior to me. But however, I'm the first speaker, so I'm so like nervous. I don't know, nervous. सब speakers बैठे हैं यहाँ पे, and but I have been given the opportunity to speak first. I'm really touched with this gesture, and she the change maker जो आपने subject चुना है. When I saw that, I really started thinking, really I'm a change maker or not. I have to gather all that information from some. Then I realized I don't know whether I'm a change maker in terms of society or not. But definitely the kind of struggle and the kind of, I don't call it struggle, I call it learning rather. That the kind of learning we have through this entire 10 years, 14 years, definitely internally we have seen that we have a change maker really. So my family has a little background of law. I have a little background, but my father is from judicial services, and my grandmother's uncle was in Calcutta Bar. He was a barrister over there. So, despite having this kind of little bit of background of law, I never aspired to become a lawyer, to be very honest. I never wanted to become a lawyer. I was always confused about my career. Rather, I did not take it seriously ever. So, at times, I wanted to become a singer. At times, if I'm doing Kathak, I wanted to become a Kathak dancer. Then, at times, I wanted to become a social worker. I have all kind of open field. Then but something happened in my life which turned everything, and then finally I became a lawyer. So I think this is the right forum to share that, because we have to talk about the struggle and the learning, how we learn. So when I was studying in BHU, I was this Banaras University has expelled me, and that is the best thing they did. Because after that expulsion only I realized the law is a very good field for me. So I was expelled, and same my parents, and though there was no direct restrictions that you should not go to the court, you should not challenge, but एक विरोध तो था कि क्या जरूरत है करने की, you are a woman यार, और भी कुछ करना है, शादी वादी तो it's the most important thing in the life of a woman. सो शादी का चक्कर है, देन किसी को पता चलेगा कि लड़की को एक्सपेल किया गया यूनिवर्सिटी से, तो फिर तो कोई इज्जत ही नहीं बचेगी, एंड देन तो इट्स ऑल ओवर. सो देयर वाज अ साइलेंट वो विरोध था कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यूनिवर्सिटी से निकलो, कहीं और एडमिशन ले. And then I decided कि no, it was pinching me, hurting me a lot. Why should I leave this? And I should fight for the justice. I will not be feeling satisfied ever in my life कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है. Then finally, despite all those restrictions, all those I went to the High Court, Allahabad High Court. Allahabad High Court में I saw that okay fine, so this is the right way to get justice, because सब जगह से तो मुझे justice मिला, but the court is going to give me justice. And to be जब वो Allahabad court ने order pass किया, तो उसमें एक line लिख दी मेरे लिए, and they wrote, she is a brilliant student with excellent academic records. The moment I saw that line, I realized, oh my God, I got a certificate also from the court. So now this is the right profession for me. And then I decided to do law. And I went to the Banaras University. So that was my turning point. So nowadays, many students are always confused what to do, what not to do. But sometimes it happens, you are destined to do something, and then finally you do that. So then my journey started. But after doing law, I went to University of Birmingham also. That time also, being a lady, I was told that क्या जरूरत है इंग्लैंड जाने की, and फिर शादी भी तो करनी है. So everything in a woman's life, I think everybody will agree to this. Now we are gradually changing, but अभी जो था सब कुछ शादी के इर्द गिर्द घूमता होता है, क्योंकि पेरेंट्स का एक एम जरूर होता है, whosoever they are, they always wanted to find a good आपके लिए अच्छा एक हस्बैंड ढूंढ देना is a big deal for them. तो उसके लिए आपको भी थोड़े बैरियर्स तो आपके होते हैं. बट आई हैव ऑलवेज बीन लाइक नहीं, मुझे तो जाना है तो आई हैव टू गो. सो डिस्पाइट ऑल दो विरोध के बावजूद भी मैं चली गई, पढ़ के आ गई. Then the struggle started really when I initially joined a law firm in Delhi. It was a good experience. Then I decided to come to Mumbai because this is an arbitration hub. So I wanted to do international arbitration, so I came to Mumbai. I joined a law firm.
since we belong to Banaras University, the values you all have inculcated in us, we have learned that whatever we will do, we will not compromise with our values ever. Thereafter, I found something happening in the law firm which was not acceptable to me. Rather, it was indecent. So I raised my voice. I said, no, I'm not going to tolerate this. And this was happening with many women, but they wanted to succumb to all that. So I said, I am going to take a lead. Now you have to support me. They agreed, and thereafter I took a lead. But when the matter was like aggravated, then finally I was given two options. And I was declared to be militant attitude. With Vidya, you are having militant attitude, and now you have just joined. I was a very welcomed associate, kind of. My salary was increased double in 3 months' time because I was very hard working. But when I raised my voice against something indecent, then suddenly I became the terrorist attitude and all that. And finally, I was given two options. If somebody has to part with from the law firm, then it's you because you are the junior, you're a woman, you have just joined, and you are complaining against partner and all that. He has been for 15 years and all. I said, okay, fine, I will resign. And I immediately resigned without thinking because I was not ready to compromise with the values. And after resigning, my first case, my independent case was against the law firm only. I filed the first case against my law firm and I started my independent practice. So thereafter, the matter went and I won that matter and I was compensated again. And I remember when my 164 statement was being recorded. So I'm just sharing this because it was shared by the magistrate, and she told me that, see, look, there's so many things are happening with the woman, but you really took a very bold step because I always tried to do that, but I couldn't take this kind of step, the kind of step you have taken against a law firm because Mumbai is a very alien city to me. I belong to Varanasi and a small city of Bihar. So it was nobody here to support me, but the kind of step you have taken is really very welcoming, and every woman should take this kind of step. They should not keep. Keep mum. So my journey started, ma'am, and now I feel that every time you go to the court, especially in the litigation I'm talking about, every time there is a barrier. But it's not the case that if you actually work hard and if you actually try to like push forward, आप कोई रोक नहीं सकता. So now I have reached a position जहाँ मैं आज बाकी औरतों को help कर रही हूँ, and I have been educating women what kind of steps you can take, what you should do, what you should not do. अगर कुछ हो रहा है तो you should not keep mum. So these things are there, but whatever is happening, at least at one point of time, though, I was told by one of my colleague only when I decided to switch to litigation, because litigation is very demanding. If you are into corporate sector, there is a different kind of expectations you have to deal with. But in litigation, you have to be on toes all the time. And starting a law firm, starting something new in Mumbai. So I was told one day, in a very sarcastic manner in the court, that ये सब आपके लोगों के बस की बात नहीं है. आप लोगों के बस की बात means women के बस की बात नहीं है to run around in the court here and there and to deal with this kind of people every day. So it pinched me so much that I thought कि आप लोगों की बस की बात नहीं. What do you mean by आप लोगों के बस की बात नहीं है? I said ये बिल्कुल मेरे बस की बात है and I'll prove it to you. And today the same fellow, he comes to my office for my advice. so so this has been the journey, and I really feel that every woman, आज भी बहुत सारे मेरे ऑफिस में भी इंटर्न्स आते हैं जो भी उनका जो आज भी society is changing, but still there is a lot of barrier for women, at least in the litigation, the law field. Therefore, I think most of the women try to get into some kind of corporate job, or they want to join some job wherein they have a fixed timing kind of job. They don't have to like 9 to 5 job they're looking for. So therefore, when this pandemic started, so we have this, we learned this video conferencing, hearing, and all that. So now this is established that every court is functioning through video conferencing. We are also being given opportunity. But in the meanwhile, during the pandemic, I filed RTI in the entire India.
and we try to find out, to gather information, how many crèche facilities are there in the code, because Maternity Benefit Act is there, but the crèche facility is not provided in the codes and all that. So after availing all those information, now we are intending to file a PIL, because we learned that because of this running around, family taking care of the child, most of the women are dropping their practice. Like, they are not litigating advocates. So therefore we are doing this kind of things. So these are now, I don't know whether I'm a change maker or not, but definitely we are trying a little bit, and hope those students and all, they should not, if अगर कोई struggle आता है, कोई बीच में बाधा आती है, तो you should take it as a learning. At least this is what I have done in my way. So there are many speakers, and they are much more experienced than me, so they can take the discussion further, ma'am, with your permission. Thank you so much, Sidvidya. I would like to mention here that it has never been an easy task to break the glass ceiling. And sometimes we even don't know the invisible barriers of our lives. But our people have certainly broken that glass ceiling. You are the true role model of this year's International Women's Day campaign that break the biases. Thank you so much, Sidvidya. Now I would like to inform the August gathering that Honorable Mrs. Justice Vijay Lakshmi ma'am has joined. So I would first of all like to welcome ma'am, and then I will read a brief introduction of hers, and then only I will invite her to speak. Friends, we are blessed to have Honorable Justice Vijay Lakshmi ma'am as our distinguished panelist. Honorable Mrs. Vijay Lakshmi ma'am graduated in law from Banaras Hindu University in the year 1977 and enrolled as an advocate on December 15, 1977. She practiced in Allahabad High Court and appointed in higher judicial services in the year 1998. She was promoted as district and sessions judge in the year 2008 and elevated as judge of Allahabad High Court on 3rd February 2014. She has also functioned as a member of Administrative Committee of Allahabad High Court. She retired as a judge from Allahabad High Court on 28th October 2018 and then appointed as chairperson of Standing Appellate Committee AICTE, that is All India Council for Technical Education, Delhi, in January 2019. She joined as judicial member, Central Administrative Tribunal, Principal Bench on 25th October 2019. Ma'am, our students are anxiously waiting to listen to you. You are very humbly requested to bless them all. Honorable Mrs. Justice Vijay Lakshmi ma'am. Respected Madam Abha Trivedi ji, respected Professor Vibha Tripathi ji, respected Professor Ali Mehndi ji, and all my esteemed alumni from BHU. It is my proud privilege to have an opportunity of sharing my feelings with you on the occasion of International Women's Day. Every year on 8th of March, we celebrate International Women's Day to spread awareness about women empowerment and gender equality. The first International Women's Day celebration took place far back in the year 1911. And since then, we are celebrating it every year all over the world. However, it appears very strange and rather ridiculous that we are still even after passing of such a huge period, we are still waiting to achieve our goal. The topic chosen for this webinar by BHU, Professor Vibha Tripathi, is she the change maker. So I would like to come directly to my topic, and because all of you are so well versed in law and all have great experience, I would like to start my lecture with a story of महाभारत काल की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ शॉर्ट में. शी द चेंज मेकर. आप ये देखिए कि हमने वुमेन की अपनी परिस्थितियों को एक औरत ने ही बदला है.
एक उसने ही बदला है। कोई यहाँ पे लेडी ऐसी नहीं होगी जो ये कह सके कि मैंने बिना स्ट्रगल के लॉ कर लिया, क्योंकि खास तौर से हमारी जनरेशन या हमसे पहले के लोग हैं, उन्होंने तो बहुत विरोध उनके घर में हुआ था और बहुत कम लड़कियां थी। मैडम आभा त्रिवेदी तो मैंने मुझे पढ़ाया, वो जानती हैं कि हम लोग 2 लड़कियां थे क्लास में, और अगर किसी दिन एक नहीं आती थी तो दूसरे को तो किसी से लड़कों से बोलना नहीं है, तो पूरा दिन कैसे बीतता था वो हम ही जानते हैं। लेकिन पहले मैं पौराणिक काल से शुरू करती हूँ। शायद आपने ये कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ, शायद आप लोगों में से सुनी भी हो लोगों ने। महाभारत की द्रौपदी का चरित्र तो सबने देखा है, कैसे उसको एक वस्तु समझ के उसको जुए में दांव में लगा दिया, उसको 5 लोगों में कह दिया कि बांट लो, जैसे कोई भिक्षा की कोई चीज आई हो, अनाज आया हो कि 5 लोग बांट लो, सब कुछ उसने सहा द्रौपदी ने, लेकिन उसने थोड़ा सा विरोध किया। द्रौपदी के समान ही एक और चरित्र है महाभारत में, उसका नाम है माधवी। माधवी जो थी वो राजा ययाति की पुत्री थी और बेहद सुंदर, बेहद रूपवती, बहुत गुणवती कन्या। जब वो जन्म उसका हुआ, उसके पिता ययाति पूरे विश्व के मतलब सबसे बड़े राजा थे, बहुत दानवीर राजा थे। ज्योतिषियों ने बताया माधवी के बारे में कि माधवी का भाग्य इतना तेज है कि वो जो भी किसी भी पुत्र को जन्म देगी वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। माधवी अपने पिता के साथ रहती थी। इधर विश्वामित्र मुनि का नाम आप लोग ने सुना होगा। विश्वामित्र मुनि के एक शिष्य थे ऋषि गालव। गालव को विश्वामित्र ने शिक्षा दी, तो गालव जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो गालव मुनि ने विश्वामित्र से कहा कि गुरुजी मुझे कुछ आपको दक्षिणा देनी है, कोई दक्षिणा ले लीजिए मुझसे। गालव क्योंकि बहुत गरीब थे और विश्वामित्र जानते थे कि इनके बस का नहीं है मुझे कुछ भी दक्षिणा देना, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं दो हमें, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, वही मेरी दक्षिणा है। लेकिन गालव पीछे पड़ गए कि नहीं गुरुजी आप दक्षिणा लीजिए, मैं दूंगा। तो विश्वामित्र थोड़े क्रोधी भी थे, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तो ऐसा है कि तुम मुझे 800 दूध की तरह सफेद घोड़े ले आओ जिनके कान काले, ऐसे 800 घोड़े लाके दो मुझे। अब इस तरह के 800 घोड़े जो दूध की तरह सफेद हों और जिनके कान काले हों, ऐसे घोड़े वो कहाँ से लाते? तो उनके मित्र थे गरुड़, जो गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन है हमारे पौराणिक कथाओं में। उन्होंने अपने मित्र गरुड़ से कहा कि तुम ऊपर उड़ के जाओ, पूरे वर्ल्ड में देखो कहाँ पर 800 सफेद घोड़े मिलेंगे जिनके कान काले हों, और मुझे बताओ तो मैं वहां जाके उनसे दान मांगू और वो मैं विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा दूं। गरुड़ ने पूरे संसार का चक्कर लगाया और कहा कि एक साथ तो कहीं भी नहीं दिखे मुझे 800 घोड़े इस तरह के, लेकिन 200 150 ऐसे करके कहीं कहीं मुझे लगा है। अब कितने हैं मालूम नहीं, तो तुम जाओ, तुम जाके दान मांगो राजाओं के पास। तो सबसे बड़े राजा, उन्होंने कहा काशी नरेश और अयोध्या नरेश के पास तो मैंने देखा है, और मैं देख लेना, पता लग जाएगा। तो काशी नरेश सबसे बड़े थे उस समय, सबसे महान राजा थे। उनकी उम्र रही होगी वही कोई 50-60 के बीच में थी। गालव ऋषि वहां गए, नहीं सबसे पहले गालव ऋषि ययाति के पास गए, क्योंकि ययाति सबसे बड़े राजा थे। तो ययाति के पास जब गए, उन्होंने कहा कि मुझे 800 घोड़े दीजिए। तो राजा ययाति ने कहा कि देखो मैंने अभी एक कोई यज्ञ किया था, सारी संपत्ति दान कर दी, घोड़े गाय सब दान कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। तो मेरी एक पुत्री है माधवी, तुम उसको ले लो, और उसको वरदान है कि उसका जो पुत्र होगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो तुम किसी भी राजा को जाके उसको दोगे तो वो तुमको बदले में घोड़े दे देगा, और वो क्योंकि उसको चक्रवर्ती पुत्र मिलेगा। माधवी उस समय 14-15 साल की बालिका थी, उसको उन्होंने दान कर दिया, एक वस्तु की तरह दान कर दिया। माधवी की तो कोई उस समय हैसियत ही नहीं थी कि वो बताती कि मेरी इच्छा है या नहीं है। उसको लेके वो गालव मुनि गए राजा काशी नरेश के पास, उनसे कहा कि मुझे 200 घोड़े दे दीजिए, और ये जो है बदले में आप इसको ले लीजिए, ये पुत्री ययाति की पुत्री है, बड़ी कुलीन कन्या है, और आप इससे एक पुत्र पैदा आप करेंगे, जो बच्चा पैदा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ययाति राजा ने उसको माधवी को दे दिया। वो माधवी को जब वहाँ काशी नरेश के पास गया तो काशी नरेश बड़े खुश हुए कि ये लड़की तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी। उन्होंने 200 घोड़े तुरंत दे दिए, 200 घोड़े उनके पास थे। और उससे उन्होंने कहा कि क्योंकि आप हमें 200 घोड़े ही दे रहे हैं और हमें 800 घोड़ों की जरूरत है, तो साल भर के बाद आप हमें इसको वापस कर देंगे पुत्री को, जब आपके एक पुत्र ये दे देगी। उसको साल भर रखा। उसके जब बच्चा हुआ, वो बच्चा अभी छोटा ही सा था बिल्कुल, उसको गालव मुनि ने कहा वापस करो, वापस ले गए। फिर वहां से अयोध्या नरेश के यहाँ ले गए। वहां भी उन्होंने कहा कि मैं 200 घोड़े दे सकता हूँ, मेरे पास 200 हैं। उन्होंने कहा ठीक है, साल भर के लिए आप रखिए और फिर मैं इसको ले जाऊंगा जब आपके पुत्र ये दे देगी। फिर वहां उसके एक बच्चा हुआ।
और उसको जब वो अभी छोटा ही सा बच्चा था, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उसको, एक तो वो खुद इतनी छोटी थी, उसको आना पड़ता था इनके घोड़ों के लिए। फिर इनको 400 घोड़े हो गए। फिर किसी और राजा के पास गए, वहां भी यही कहानी दोहराई गई। इसी तरह से 600 घोड़े इनको मिले। 600 घोड़े लेके जब वो विश्वामित्र के पास पहुंचे तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तो भाई 800 घोड़े तुमसे कहा था। तो बदले में उन्होंने विश्वामित्र को दे दिया उसको कि भाई आप भी एक बच्चा पैदा कर लो इससे। तो वो विश्वामित्र के पास भी रह गई उनकी पत्नी बन के। इस तरह से आपका आदान तो प्रदान, नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आदान प्रदान होता रहा उसको। और एक वस्तु की भांति। देखिए रुकिए रुकिए। Please, Abha madam is requested to mute her mic, please. Please mute. Please remain yourself muted, ma'am, so that Vijayalakshmi ma'am may deliver her lecture. इसके बाद फिर ये महाभारत काल में ये परिवर्तन आया, चेंज आया है कि जब द्रौपदी ने ये किया, उसने भी माना सब कुछ, लेकिन उसने एक विद्रोह किया। द्रौपदी के चरित्र में आप देखिए एक विद्रोह है और एक चेंज आया वहां उस समय से। उसके बाद धीरे धीरे चेंज आता गया। और आधुनिक काल में स्वतंत्रता के बाद भी हमारे जो आज़ादी की लड़ाई हुई उस समय भी बहुत चेंज आया और औरतें खुद ही अपनी अपनी रक्षा खुद किया। रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेके युद्ध के मैदान में उतर गई। उन्होंने इस तरह से सरेंडर नहीं किया जैसे पुराने जमाने में पौराणिक काल में महिलाओं ने कर दिया था, कुछ महिलाओं ने। उसके बाद फिर आपने देखा अभी हमारे यहाँ एक बहुत, आपने आजकल आप सुनते होंगे मी टू मूवमेंट। उसके अलावा ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, या इस तरह से कई आपने देखा होगा विशाखा गाइडलाइंस। ये सब बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो सुनी होंगी आपने लेडीज़ के, वुमेन के एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी के विषय में। इसमें कैसे चेंज आया? इसमें भी एक औरत का ही, जो औरत बहुत ग्रामीण, बहुत ही पिछड़े क्षेत्र की दलित महिला थी, उसने ये चेंज लाया जो विशाखा गाइडलाइंस का मशहूर केस हुआ, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, और जिसके परिप्रेक्ष्य में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस ये एक्ट पास हुआ। उस महिला का नाम था भंवरी देवी। भंवरी देवी के बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे। भंवरी देवी राजस्थान के एक गांव की बड़ी दलित महिला थी और वो जो थी वो एक राजस्थान गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट उनका चल रहा था वुमेन डेवलपमेंट का, उसमें वो साथिन की तरह काम करती थी। साथिन का मतलब होता है कि एक सहेली, जो कि उसका काम है कि बेसिकली उसका काम होता है कि गांव-गांव जाए और अवेयरनेस फैलाए कि भाई वुमेन को कि चाइल्ड मैरिज नहीं करनी है, भ्रूण हत्या नहीं करनी है, लड़कियों को पढ़ाना है, ये सब चीज़ें वो उसका काम था। तो उस गांव में, राजस्थान के उस गांव में एक कोई गुजर फैमिली थी। वो अपने 9 महीने की बच्ची की शादी कर रही थी। सोचिए 9 महीने की बच्ची की शादी करने वाले थे वो लोग। तो भंवरी देवी को पता लगा, ये जाके उसने शादी रुकवाने की कोशिश की कि नहीं ये शादी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका और कहे कि नहीं तुम जाओ, हम लोग तो शादी करेंगे। तो जब भंवरी देवी को कुछ नहीं समझ में आया तो वो अपने जिले के कलेक्टर के यहाँ गई और पुलिस स्टेशन भी गई और कहा कि भाई ये शादी रुकवा दीजिए, 9 महीने की बच्ची की शादी हो रही है। लेकिन वो लोग भी उसी मेंटेलिटी के थे। राजस्थान में थोड़ा अभी भी मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, औरतों को बहुत वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा उसमें रखा जाता है पर्दे में और बहुत उससे। तो उन्होंने नहीं माना। तो जब उसने बहुत वो कोशिश करी कि मैं कलेक्टर की भी शिकायत करूँगी या कुछ, उसने दबाव बनाया, तो फिर उन्होंने, पुलिस पहुंची वहाँ गांव में और शादी रुकवा दी। रात में पुलिस आई, शादी रुक गई, उसके बाद पुलिस चली गई। लेकिन दूसरे दिन वो शादी कर दी गई, उन लोगों ने शादी कर दी। और क्योंकि भंवरी देवी के कहने से पुलिस आई थी गांव में, तो उनको बड़ा इंसल्टेड वो लोगों ने फील किया कि इसकी वजह से हमारे गांव में पुलिस आ गई और हमारे मेहमानों के बीच में हमारी बदनामी हुई, या जो भी समझा। उसका बदला उन्होंने ऐसे लिया कि भंवरी देवी के पति को बहुत मारा और 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें कि उस बच्ची का बाप भी शामिल था जिसकी शादी कराई गई थी, उन 4 लोगों ने मिलकर ब्रूटल रेप भंवरी देवी का किया। भंवरी देवी की आगे से इसकी हिम्मत ना पड़े इस तरह का कोई काम करने की। भंवरी देवी गई पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने। पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, बहुत मिन्नतें करके किसी तरह से एफआईआर लिखी गई, लेकिन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन 52 घंटे बाद हुआ कि उसके कोई
और पुलिस वालों ने कहा कि तुम अपने कपड़े बदल के आओ, ये कपड़े हमें दे दो, इसकी हम फॉरेंसिक जांच करवाएंगे। और उसके कपड़े भी गायब कर दिए भावरी देवी के, जो उसने दिए थे पुलिस वालों को। तो सब पुलिस ने मिल मिला के सारे सबूत खत्म कर दिए। इसका जब ट्रायल चला तो वही होना था, ट्रायल कोर्ट से एक्विटल हो गया सबका, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। फिर जो कुछ ऐसे वो थी एनजीओज थे और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे, उन लोगों ने भावरी देवी की आवाज़ उठाई। उसमें एक विशाखा करके भी था, दिल्ली का या राजस्थान का ही था, ये एक विशाखा एक एनजीओ था। उन्होंने भावरी देवी के लिए एक PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा कि इट शुड बी ट्रीटेड as a harassment at workplace because she was doing her duty at the time when she was opposed and she was humiliated and beaten and raped. उन्होंने कहा कि भाई कोई एक लॉ बनाइए कि अगर कोई औरत अपनी ड्यूटी कर रही है और उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी अलग से सजा हो। IPC में भी उसका केस खाली कवर हो रहा था छोटे से क्या कहते हैं, छोटी छोटी मतलब सेक्शंस में, क्योंकि रेप का कोई सबूत नहीं मिला था उसके। लेकिन होते होते आप ये सोचिए कि इतनी पुराने इंसिडेंट का लॉ बनते बनते 2013 में जाके ये एक्ट बन पाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। इस तरह से कर करके किसी तरह हर औरत ने संघर्ष कर करके, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, हम लोग में से कोई हो, हर औरत ने संघर्ष किया उसको चेंज लाने के लिए सोसाइटी में। तो शी द चेंज मेकर, ये बिल्कुल सही आपने मतलब बात कही है, क्योंकि हम सब अपने 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 दिलों में सब जानते हैं कि हमने भी संघर्ष किया है। कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे सब बड़ा स्मूथली मिलता गया, कुछ ना कुछ तो संघर्ष सबको करना पड़ा सोसाइटी से अपनी जगह बनाने को, अपना वो करने को। और मैं सबको, मैंने बस ज़्यादा मैंने कुछ एकेडमिक नहीं रखा अपना भाषण। मैंने कहा वो सब यहाँ पे बहुत एकेडमिशियंस हैं, सबको लॉ में क्या पढ़ाऊँगी, मैं एक स्टोरी बस बताती हूँ, थोड़ा सा लाइट वो रहेगा कॉन्वर्सेशन। और सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सबको मेरा प्रणाम। खासतौर से आबा मैडम को देख के बहुत अच्छा लगा, हमारी टीचर थी, हम लोग को बहुत इन्होंने गाइड किया। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने को, मुझे पार्टिसिपेट करने। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I would like to inform the August gathering that the First Lady LLM has now joined this webinar. Professor Surendra Kumar Verma, ma'am, from USA, she has joined. And I would like to say here only this thing for Vijay Lakshmi, ma'am, that it is not easy to step out of your comfort zone and put yourself in the public eye just for supporting a cause. But you stayed true to your conviction, knowing the fact that the society tests every ounce of your inner strength. Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite Garima Mishra Didi. She is the next speaker, and she is additional district judge at Devghar from Jharkhand Judiciary. She did her LLB, LLM both from BHU and joined Jharkhand Judiciary in 2002. She has been serving law and people ever since. और आज इस शी दी चेंज मेकर के मौके पर मैं गरिमा दी के बारे में इस पूरी गैदरिंग को ये बताना चाहूँगी कि उनके साथ गोरखपुर में इंटरव्यू देने गई थी और वो इंटरव्यू मैं देने नहीं जा पाती अगर गरिमा दी ना होती, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि विभा चलो, अगर तुम्हारा हो जाएगा तो तुम ये नहीं कहोगी कि मेरी वजह से तुम दी इंटरव्यू। और ये आज मैं सबके सामने एडमिट करती हूँ, इट वॉज शी, because of her I could appear in that interview. She arranged everything and I got selected there also. So most welcome Garima Di. You are here to share your views. Thank you, Vibha. Good evening, everyone. Happy Women's Day to all. Almost every country, no matter how progressive, have a history of ill-treating women. In other words, women from all over the world have been rebellious to reach the status they have today. Women today have proved themselves in every sphere. There is no sphere where women have not excelled. From medical to sports, from administration to industry of arts. Apart from this, women are also fabulous homemakers. So far as our Indian culture is concerned, the concept of respecting women and their dignity is no new.
हमारे वेद पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब हम देवी देवता की बात करते हैं तो दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, शिवा जैसी शक्तियां हमारी संस्कृति में पूजनीय मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए शिव तब तक शिव नहीं है जब तक कि शिवा उनके साथ नहीं है, जब तक कि शक्ति उनके साथ नहीं है। अगर शक्ति उनके साथ नहीं है तो फिर शिव शव हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे देवी देवता की बात हो या आम जन की, सभी जगह नारी के बिना पुरुष अधूरा है, अर्थहीन है, क्योंकि स्त्री ही पुरुष की प्रतिपूरक होती है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें समानता का अधिकार देता है, किंतु अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो वहां समाज के नजरिए को बदलने की जरूरत है। BHU Law School has contributed its fair share in women empowerment. Many fabulous women completed their studies and have come out in the world with flying colors, as bold as strong women. I am a BHU alumna myself. I completed my LLB in 1996, then LLM in 1998. Further, I enrolled for research on women empowerment